नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एजुकेशनल और एग्जाम फोकस्ड एपिसोड में एट योर नॉन अदर देन चैनल गवर्नमेंट दृश पर, जहां आपको एग्जाम वाइज सब्जेक्ट वाइज कंटेंट मिलते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे कि यूपीएससी, बीपीएससी, नीट एंड मेनी मोर। तो आज है इंडियन पॉलिटी का पार्ट 4 और आज हम कवर करने जा रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, जो एक छोटा टॉपिक है और उतना ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से मैच द फॉलोइंग assertion, रीजनिंग एज वेल एज वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस रिपीटेटिव आते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि एंड में मिलेगा एग्जाम का एक टिप सेगमेंट और नेक्स्ट पार्ट का एक टीजर भी। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मिलेगी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट ऑन अ रेगुलर बेसिस। सो इन सेक्शन 1, लेट्स नो द बैकग्राउंड एंड द नीड ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। Fundamental duties was added in 1976 through the 42nd Amendment Act. और ये fundamental duties इसीलिए लाया गया था ताकि citizens will be aware that they have rights but they have some duties towards the country as well. और fundamental duties inspired थे from the constitution of the USSR, former Soviet Union, जो कमेटी के बेस अंडर में ये एक्ट किया था और जिसका रिकमेंडेशन दिया गया था वो था स्वरन सिंह कमेटी 1976। उन्होंने 8 ड्यूटी सजेस्ट की थी, बट नॉट 8, 10 ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड अंडर द आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस सेक्शन में हमने जाना फंडामेंटल ड्यूटीज के बैकग्राउंड के बारे में। तो यहाँ से जो आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो वो है कि under which amendment was fundamental duties added, and what was the name of the committee that recommended fundamental duties, and under which article is the fundamental duties added. सेक्शन 2 में अब जानेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, जो है आर्टिकल 51A के अंडर। और ये आर्टिकल 51A है पार्ट 4 के अंडर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो देता है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो चलिए एक एक करके हम जानते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। द फर्स्ट वन इज टू रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन फ्लैग एंड एंथम। चेरिश नोबल आइडियाज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इज द सेकेंड वन। थर्ड में आता है टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड, promote harmony among all people, avoid linguistic or religious discrimination, preserve our rich heritage of composite culture, protect the natural environment, which includes forests, lakes, wildlife, rivers, develop scientific temper, humanism, and inquiry, safeguard public property, and avoid violence. The 10th one is strive for excellence in all spheres. 11th one has been added under 86th Amendment 2002, that is to provide education to all children aged between 6 to 14 years. Remember that these duties are non-justiciable. इसका मतलब है कि आप इस ड्यूटीज़ के वायलेशन को लेके कोर्ट में केस नहीं कर सकते। तो इस सेक्शन से जो आप एग्जाम टिप ले सकते हो वो है अंडर विच पार्ट इज द फंडामेंटल ड्यूटीज been there and has been inspired from which constitution, that is the Soviet Union, and under which amendment has been the right to education of the students aged between 6 to 14 years have been added, as well as mentioned the year as well. Remember to that all the amendments and the years are very important and you need to note down that. Section 3 में जानते हैं importance and legal status. फंडामेंटल ड्यूटीज़ जस्टिशिएबल नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेट मी ब्रेक डाउन इट फॉर यू। इम्पॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इज टू promote importance of the nationalism, reinforce the system of national integrity, and also the importance of being a responsible citizen, help in maintaining public order and discipline. ये non-justiciable है and it cannot be enforceable by court, but it can be enforced indirectly. Example in environment cases, that's under Article 51A, subclause G. The reason is court considers fundamental duties while interpreting laws. Also used to justify the restriction on fundamental rights in certain cases. And one case law is Raghunath Mishra case 2003, जहाँ पे SC ने अपना रूलिंग दिया था कि फंडामेंटल राइट्स आर एज इम्पोर्टेंट एज फंडामेंटल ड्यूटीज। इस सेक्शन से आप एग्जाम टिप ले सकते हो, सच एज वन लाइनर क्वेश्चन कैन कम और अ वेल give reasons. Questions can also come that if the fundamental duties are not enforceable or it's not justiciable, how can it be enforced? Give one case laws as well as give one such illustration. So you can give the illustration which has been given, that is our environmental protection, the example that has been used.
Now in section 4, let's do a comparative analysis of the fundamental duties with fundamental rights. Fundamental rights is under part 3 of the Indian Constitution and fundamental duties is part 4A of the Indian Constitution. And enforceability of fundamental rights is justiciable. On the other hand, fundamental duties is non-justiciable. Fundamental rights focuses on the rights of the citizens, whereas duties of the citizens are the main goals of the fundamental duties. There are total 6 rights and 11 duties. Fundamental rights are inspired from the USA Constitution and fundamental duties are inspired from the USSR Constitution. This comparative analysis से आप questions ऐसे expect कर सकते हो that under which part does fundamental duties of one comes, and there are how many total fundamental duties as well as it is inspired from it, and such basic questions from this section, and there can be a comparative analysis. Section 5, let's know about the criticism and the suggestions of the fundamental duties. As per the experts, these are just some general facts or the criticism that I have been presenting and which is backed by sources. So first is that as it is not justiciable, so there is no legal punishment is one of the major drawbacks. Language has been used such as noble ideals and composite cultures are open for interpretations, and public awareness about these sources are also very low till date. तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने जाना फंडामेंटल ड्यूटीज का कोर origin as well as Article 51A's 11 duties, legal status and relevance in court as well as its comparison with rights, criticism and reforms of this as well. तो पार्ट 5 में हम कवर करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वर्सेस फंडामेंटल राइट्स, अ हाईली कंपैरेटिव टॉपिक इन मेंस एंड प्रीलिम्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम फिर से ला सके आपके लिए एग्जाम बेस्ड कंटेंट, वो भी नन अदर देन योर गवर्नमेंट द्रिश। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर और हिट द बेल आइकन एज वेल एंड कीप वॉचिंग अस एंड कीप सपोर्टिंग अस। और तब तक फोकस रहे और गवर्नमेंट दृश्य के साथ ग्रो करें। सी यू सून।